So before discovery of neutrino, it was assumed that you have a beta decay is like you have a daughter nuclei in the product. In addition to this, you have a beta particle. But there are so many problems with that prediction, right? First of all, angular momentum was not conserved. Can you please mute your स्मूथ पार्ट लेके आया करो ना, सिर्फ पता लगता है। can you mute your mic? So there are so many problems with this prediction, right? First of all, spin was not conserved. Then there is a problem with linear momentum conservation. And in addition to this, that energy was not discrete of that beta particle, kinetic energy. Then Pauli said there is some additional particle in beta decay that is known as either neutrino or anti-neutrino. And he gave that properties of neutrino or anti-neutrino. It's massless. It's massless. I mean, you cannot say that neutrino is having mass. In recent discovery, there's a Nobel Prize in 2015. There's some finite mass of neutrinos. But in our course, we'll always deal with zero neutrino mass. Okay, and then you have a neutrino is a neutrino or anti-neutrino is actually fermion. They are spin-half particle, and they are also chargeless. And that emitted neutrino, he said that emitted neutrino can take any energy values. It means if there is any possible values of that energy of neutrino, so that emitted beta particle can have any possible value of kinetic energy from 0 up to Q value. Okay, now we are going to discuss about that condition for beta decay. So you have a beta minus decay first of all. You have a beta minus decay. Okay. So in beta minus decay, you have a parent nuclei, atomic number J, mass number A is going to daughter nuclei, atomic number Z plus 1, and you have a mass number A. And then you have a beta particle. And there's some additional particle that will be here, electron antineutrino. That why this is antiparticle that we have discussed in particle physics, if you remember, to conserve that lepton quantum number as well as electron lepton quantum number. ठीक है ना? And again, I'm telling, if in interview or someone asks what is the difference between beta particle and electron, so beta particle can have charge like positive E as well as negative E. And it can be found only inside nucleus. However, electron can have charge like negative B, and it is found outside the nucleus around electronic orbit or atomic orbit Now, suppose this is the nuclear reaction or beta decay, beta minus decay. Now, can you tell me what will be the Q value corresponding to, if I give the notation, suppose the nuclear mass of parent is MZA. And nuclear mass of daughter is like M Z plus 1 and you have A. Okay. And suppose the mass of electron is here Me. And you know, here I'll assume that mass of antineutrino and that will be 0, will be massless. Now, if I ask you what will be the Q value corresponding to this decay process, and you will say that Q beta minus, because beta minus means there's a beta minus decay here. So energy release in this process will be, I can write that mass of reactant, that is MZA, minus mass of product or nuclear mass here. These all are actually nuclear mass. Here you have a electronic mass. So that can be like you have a M Z plus on A and minus Me, and then we'll have C square. Okay. So now if I ask you, can you please calculate this nuclear mass in terms of atomic mass? If I ask you, this is the all are nuclear mass here, right? Nuclear mass of daughter, parent. Now this thing you will see, be careful here. I can write this mass in terms of atomic mass, like you have a M atom
ZA minus ZME. So basically what I have done, I have a nuclear mass, I have added the mass of Z number of electrons. So you have a nuclear mass with Z number of mass of electron, that will be basically atomic mass of this nucleus. So you have added Z number of mass of electrons, so you have to subtract. So when you have attached that mass of Z number of electron with nuclear mass, this will be converted to atomic mass, and you have a this part with minus sign. And same I'll apply here also. And if you do that, you will have mass of atom Z plus on A. Now you see here I'll write minus, and you already have minus there. So minus minus it will become plus, and you will have Z plus on Me. And you have a minus mass of Me is there. Now you can see here you have a mass of electron here. If you attach this with this, it will be exactly minus Z plus on Me, and that will be cancelled with this factor. So I can basically cancel. Now why I am doing this? Why I am doing this? Because सर Z+1 के बाद क्या लिखा हुआ है? Z plus 1 के बाद this is the mass of. You understood this Z plus 1 why it is coming? First of all, tell me. Yes sir. Then this is the mass, right? Additional there is a minus Me, so this will be minus Me. Na ये वाला mass. So you are converting this nuclear mass into atomic mass. Not visible. No sir. कितना visible है? I can't see actually. 1 minute. Well, so basically I'll write this part here. You should tell me before, na? On Z plus on Me minus of Me into C square. Okay. Now you can see if you attach this minus Me with minus ZMe, so it will basically become minus Z plus on Me, and it will be exactly same as plus Z plus on Me. So this will be cancelled. I can cancel this with this and this. But why I'm doing this? Because you know that beta decay is a spontaneous process, because your nucleus is not stable. To achieve that stability, it is converting. I mean, this process is happening to achieve that stability, right? And this process is spontaneous. And for any spontaneous process, the Q value will be what for any spontaneous process? Positive. Exactly. So for any spontaneous process, okay, for any spontaneous process, that Q value will be greater than 0. So I can say that since this beta process is spontaneous process, or beta decay is spontaneous process, so Q beta minus energy release in beta minus decay, that should be 0. And you have obtained that this Q beta minus, that is how much? Atomic mass of parent minus atomic mass of daughter. So I can write that, and so there will be factor like you have a mass and C square, and that product is greater than 0, and you know the C is positive value. That is positive. It means है ना, कोई चीज आपका ग्रेटर देन 0 कब होगी? A into B that is greater than 0. तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों नेगेटिव हो तब आपका ग्रेटर देन 0 आएगी, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों आपका पॉजिटिव हो, then you will get greater than 0. So C is speed of light, that is positive quantity. So to achieve that condition, that mass difference of atomic mass difference of parent minus daughter, that should be greater than 0. So I can say that mass of, or atomic mass of Za minus atomic mass of
Z plus on A, that should be greater than 0. It means I can say the condition for beta minus decay, that atomic mass of condition for beta minus decay, the atomic mass of parent nucleus should be greater than the atomic mass of daughter nucleus. This is the necessary condition for beta minus decay, है ना? ये आपका होनी ही चाहिए, then there will be beta minus decay. Is this clear to all? Student, Yes, is sir. this clear? है ना? Then there's a beta plus decay as well. Second process is beta plus decay. Okay. So in beta plus decay, you have a parent nuclei, atomic number Z, mass number A, is undergoing beta plus decay, and you will have a daughter nuclei, atomic number Z minus 1, mass number A, and you will have a beta plus means plus on 0. And in addition to this, you will have a anti-neutrino pair. Okay, and same I'll see what will be the condition for beta plus decay as like beta minus decay. So I'll quickly do this because we already understood what is the process. So Q beta plus will be how much? So I'll write, क्या लिखेंगे हम बताओ? Sir, Atomic, mass of mz exactly. plus A. I'll write directly in atomic mass. Huh? So mass of atomic mass of parent minus ZNE, right? ठीक है ना? So this is the mass of reactant. This mass. तो Q वैल्यू में हम क्या करते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट में क्या है आपका? I'll write in terms of atomic mass. We'll have atomic mass of Z minus on A, and then you'll have Z minus 1 into Me minus of mass of positron, that is nothing but M into, and then you'll have a C square. ठीक है ना? Then you'll have a C square. Yes, sir. हाँ, अब देखो यहाँ पे आपका माइनस ZME है, इसके साथ प्लस ZME कैंसिल हो जाएगी, बट आपके पास बचा क्या रहेगी? माइनस ME एंड माइनस ME, दैट विल बी ट्वाइस माइनस ट्वाइस ME, है ना? पहले सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मास है दैट वाज कैंसिल्ड इन बीटा माइनस decay, but here you have a minus twice ME. Okay, so again that process beta plus is again spontaneous process, and for spontaneous process that Q value should be greater than 0. So the condition for beta plus decay, you have a क्या है आपके पास? Atomic mass of parent minus atomic mass of daughter minus यहाँ पे minus ME minus twice ME, है ना? So if you combine all these, basically you will get, check करो जरा, atomic mass of parent should be greater than the atomic mass of daughter plus 2 times mass of the electron. So this will be the condition for beta plus decay. Huh? This will be the necessary condition. ठीक है ना? It will be the necessary condition. ठीक है ना? This is another important part of beta decay.
another important part of beta decay, and that is the selection rule. There is a selection rule for beta decay. The selection rule for beta decay. Okay. So suppose you have a parent nuclei ZA, atomic number Z, mass number A is converting to daughter nuclei, atomic number some Z minus, let us take, no problem, and mass number A, and you will have a, क्या हो जाएगी यहाँ पे? ठीक है ना? This is I mean this is the basically क्या है? बीटा प्लस डीके है ना? अब इसमें हम क्या अज्यूम करेंगे, जो न्यूक्लियर स्पिन जो है, सपोज द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर दैट आई assume the nuclear spin of parent nuclei, that is Ji, and its parity is pi I. ठीक है ना? So nuclear spin of parent nuclei is J, है ना? Ji, I mean initial, and its parity is pi I. And the nuclear spin of daughter is JF, parity is pi F. And I'll combine these two particles, and I'll assume the angular momentum of this is J, है ना? And that will be actually कितना हो जाएगी? That will be L, combined angular momentum, orbital angular momentum plus combined spin angular momentum. Second, I am repeating, you have a beta, I have assumed here beta plus decay, same is true for beta minus decay as well. So I have assumed that nuclear spin of parent is Ji with parity pi I. The nuclear spin of daughter is Jf with parity pi F, and total angular momentum of this electron and associated electron and positron associated neutrino, इसका total angular momentum जो है J है, and that will be sum of the orbital angular momentum of both particle and its spin. ठीक है ना? Now, Yes, sir. now if L equals to 0, that's many possibilities. If L equals to 0 in the decay process, if L equals to 0, L is the total angular momentum of these two particles. If L equals to 0, then decay process will be called allowed decay. Allowed decay. ठीक है ना? If L equals to 1, it will be called first forbidden. It will be called first forbidden. Forbidden doesn't mean they are actually forbidden. This first forbidden का मतलब ये नहीं है कि ये जो decay process है that is forbidden. First forbidden जो term है यहाँ पे बीटा decay में जो use होती है forbidden term का मतलब यही है कि least जो least probable है ना, less probable you can say. Again I am repeating, so L equals to 0, that is actually most probable, that's why it is called allowed decay. फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है कि ये डीके फॉरबिडन है ना? फॉरबिडन का मतलब क्या है? इसका प्रोबेबिलिटी जो है कम है. And when L equals to 1, it will be called first forbidden. Then for higher L, if L equals to 2, it will be called second forbidden. है ना? तो सबसे ज्यादा प्रोबेबल कौन सा है आपका? L equals to 0. Then L equals to 1. जैसे जैसे L बढ़ाते जा रहे हो, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके विल बी लेस. ठीक है ना? We'll understand one by one, but please be noted that when yes. Sir, what you said about that forbidden, मेरा थोड़ा अटक रहा था. मैं कह रहा हूँ, देखो ये L क्या है एक्चुअली? L जो है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ
Yes. हाँ, बीटा पार्टिकल एंड एसोसिएटेड न्यूट्रॉन। अगर L 0 है दैट विल बी कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है, ये डीके प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबल है। और जैसे जैसे L को बढ़ाते जा रहे हो, L इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉरबिडन। फर्स्ट फॉरबिडन का मतलब ये नहीं कि ये डीके फॉरबिडन है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी कम है बट देयर विल बी डीके। L इक्वल्स टू 2, इसका प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेकंड फॉरबिडन। फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन यू कैन से है, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है। Now tell me what will be the total S. Here you have used S. तो S क्या है? S will be total spin quantum number of these two. तो इसका स्पिन कितना होती है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का स्पिन कितना होती है, हाफ होती है, राइट? हाँ, एंड एसोसिएटेड न्यूट्रिनो इसका भी हाफ होती है ना? तो इनका रिजल्टेंट क्या होगी जब आप दोनों को कंबाइन करोगे, दैट विल बी वेक्टर सम, राइट? दैट विल बी वेक्टर Yes, सम। sir. सो हाफ प्लस हाफ दैट विल गिव यू on, and half plus half minus half that will give you 0. तो पॉसिबल s क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल s हो सकते हैं either 0 और on, और l can take any values but most probable values is l equals to 0. Now we'll take various combination, and there will be different name of the decay. इसका जो पैरिटी है इसको भी यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पे पैरिटी क्या लिखोगे, पाई लिखोगे। यहाँ पे पैरिटी, जैसे यहाँ पे पैरिटी डिफाइन किया है, इसका पैरिटी जो है पाई आई, इसका पैरिटी पाई एफ, और इनका कंबाइंड पैरिटी जो है दैट आई हैव डिफाइंड पाई। सो पाई बेसिकली कितना हो जाएगी, एनीवन? यहाँ पे पाई जो लिखोगे दैट विल बी हाउ मच, पाई इसके ऊपर डिपेंड करते हैं -1 L plus S. नहीं, यहाँ पे आपका सिर्फ एल को लेते हैं, ठीक है, -1 की पावर एल लेते हैं। Okay, sir. ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे पैरिटी कंजर्व करेंगे, सपोज मान लो इस डीके में हम पैरिटी कंजर्व करेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम? पैरिटी जो होती है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, राइट? पैरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। सो लेफ्ट हैंड साइड में पैरिटी कितना है, पाई आई है, राइट? और राइट हैंड साइड में पाई एफ इंटू पाई, राइट? सो पैरिटी जो होती है मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यू हैव टू कीप इन माइंड, है ना? पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन, दैट ऑल आर एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, पाई आई है, और यहाँ पे पाई एफ है और पाई है। हम इसको सम नहीं करेंगे बिकॉज देयर प्रॉपर्टी इज लाइक मल्टीप्लिकेटिव। सो आई मल्टीप्लाई बोथ and I know that pi is how much, that is depends upon orbital quantum number, so I can write like -1 की power l into pi f। ठीक है, तो आपका क्या का पॉसिबल, ये तो आपका पैरिटी कंजर्वेशन से है, ठीक है। अब जो मेन चीज आएंगे, है ना, जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इफ आई discuss in brief, you have a decay process. I have defined angular momentum and corresponding parity. Parity is multiplicative in nature, I can define, and parity is nothing but -1 to the power l. So this will be the like parity conservation. This is coming from parity conservation. Okay. Now there are various possibilities. जैसे आपका l equals to 0 है, इसके साथ क्या हो सकती है, j क्या हो सकती है, सॉरी s क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एल और एस का डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे। तो पहला एल का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, एल का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, एल इक्वल्स टू 0, दैट इज 0. हाँ। उसके साथ जे सॉरी एस क्या पॉसिबल है, आइदर 0 और ऑन, है ना? ओके, अब यहाँ पे बताओ जे कितना हो जाएगी इस केस पे, Sir, J भी 0 हो जाएगा. जे भी आपका 0 हो जाएगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है आपके पास, जो पेरेंट है इसका, पेरेंट का एंगुलर मोमेंटम कितना है, यहाँ पे जे आई है, राइट? JI. Ji, and that will be JF,
और यहाँ पे जे तो 0 है। जब सपोज मान लो इस डीके प्रोसेस का मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व राइट इन एनी डीके प्रोसेस. So in that combination, when L equals to 0, S equals to 0, you have J equals to 0, this part. So in that case, that angular momentum of parent should be same as angular momentum of product. I mean, whenever there is no change in angular momentum of, whenever there is no change in angular momentum of parent and daughter, then I can say that L is 0 and S is 0. Also, और क्या देखना पड़ेगा आपको, पैरिटी देखो जरा. जब आपका L 0 है तो फिर क्या लिखेंगे हम, पाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगी, पाई एफ. पाई आई माइनस 1 की पावर 0 दैट विल बी 1 इंटू पाई एफ, है ना. तो ये कॉम्बिनेशन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये कॉम्बिनेशन कब आएगी, जब जब आपका डेल्टा जे हाउ विल डिफाइन, मॉड ऑफ जे आई माइनस जे एफ, mod of ji minus jf that is 0, or delta pi that is pi I minus pi f that is 0. So whenever you have a beta decay process, there is no change in angular momentum of parent and daughter, and there is no change in parity of their. इसका पैरिटी अगर प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका माइनस है, इसका भी माइनस है, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम सेम है, then I can say there will be combination like L equals to 0, S equals to 0, है ना. There will be combination like L equals to 0 and S equals to 0, क्योंकि L equals to 0 and S equals to 0 के लिए ही आपका ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना. तो जब भी कोई डीके प्रोसेस आपको गिवन रहेगी और उसमें Ji equals to Jf है और दोनों का पैरिटी का कोई चेंज नहीं है, इट मींस दे हैव गिवन दिस कंडीशन. और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, दैट डीके इज अलाउड, that decay is allowed by Fermi transition rule. Fermi transition rule. तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. देखो, जब भी कोई आपका डीके प्रोसेस गिवन होगा, आपका देख लेना दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम है कि नहीं, पेरेंट और डॉटर का दोनों का पैरिटी सेम है कि नहीं. अगर दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम है एंड दोनों का पैरिटी सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि दैट डीके प्रोसेस विल बी अलाउड बाय Fermi transition rule. Why I am saying allowed? Because this condition can be achieved only when L equals to 0. और L equals to 0 के लिए क्या बोलते हैं हम, allowed बोलते हैं. हाँ, और Fermi transition rule इसको क्यों लगाते हैं, Fermi transition rule belongs to S equals to 0. Fermi transition rule belongs to S equals to 0 and allowed means L equals to 0, and that is possible when that spin is same and parity is same. That's it. Is this clear to all students? Tell me. Yes, sir. Now second possibility क्या हो सकता है, combination. So we are dealing with low L, right? L equals to 0 and S equals to 1. Now in that scenario, what will happen to J? J कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी. Now if I apply that conservation of angular momentum, so Ji कितना हो जाएगी, JF 0 1 2. हाँ exactly, JF plus J, that will be on, and that J is actually vector sum, right? है ना. तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या मिलेगा आपको, यू हैव ए एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट दैट शुड बी मैच विथ प्रोडक्ट. और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जेफ कितना हो जाएगी बताओ, जेफ हो जाएगी आपका JI माइनस 1, JI माइनस 1, ठीक है ना. अब सपोज मान लो इफ JI इक्वल्स टू, सपोज मान लो 2 मानो, इफ JI इक्वल्स टू 2,
नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेएफ? क्या क्या वैल्यू हो सकती है जेएफ की? 1 नो, यह वेक्टर सम ना। तो जैसे आपका a प्लस बी का अगर वेक्टर सम करते हो, कहां तक जाती है? a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस टू, a प्लस बी टू a माइनस बी। तो यहाँ पे भी सेम जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? मॉड ऑफ a माइनस बी टू a प्लस बी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? I can write this thing like you have a, suppose I can write like ji plus minus on, लिख सकते हैं ना? और सपोज मान लो a प्लस बी दोनों का आप वेक्टर सम करोगे, फिर कैसे करते हो आप? a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी टू a माइनस बी, मतलब जे क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे? 2 माइनस ऑन से कहां तक पॉसिबल है? 2 प्लस ऑन तक। को याद है ना जैसे हम वेक्टर सम करते हैं दोनों का सब, मतलब a प्लस बी, इसका क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? कहां तक पॉसिबल है? a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी टू a माइनस बी, इतना सारे वैल्यूज पॉसिबल है। तो सेम थिंग आई विल अप्लाई हियर। यू हैव ए, नाउ a इज ji, that is 2 and b is how much? b कितना है यहाँ पे? Tell me. -1 minus 1. So if you apply that, a plus b कितना आ जाएगी? 1 आ जाएगी, राइट? 2 minus on, that will be on, कहाँ तक जाएगी? 2 plus on, that will be 3. So on 2 3, these three values of j will be possible. तो j का क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? on 2 3. So a plus b that will give you on, and a minus give that will give you 2 minus of minus 1, that will be 3. So on to 3, in between them you will have 2. So on से 3 सारे वैल्यूज पॉसिबल है इंटीजर। So on to 3. अब बताओ डेल्टा जे क्या क्या होगी यहाँ पे? डेल्टा जे कैसे डिफाइन किया था? इफ यू रिमेंबर, दैट इज लाइक मॉड ऑफ जे आई माइनस जे एफ, है ना? यहाँ पे जो है आपका वैल्यूज है, ये वेक्टर नहीं है ना, मैग्नीट्यूड है। ji and jf, they are actually not vector here, just a magnitude. अब बताओ क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है ji माइनस jf की? क्या क्या होगी? 1 and 0 1 0 minus 1 on 0 minus 1. When you have ji is 2 and jf is on 2 minus 1, that will give you on 2 minus 2, that will give you 0, and 2 minus 3, that will give you, sorry यहाँ पे जो होती है, sorry I made a mistake, there will be no minus here, sorry modulus here. So it means that j values क्या क्या हो सकती है? 0 plus minus 1 हो सकती है ना? आप you may ask me why you have taken ji equals to 2. You can take any ji and corresponding jf you can calculate, and you can see that for this combination L equals to 0 and S equals to 1, the delta j can only be possible, that will be 0 or plus minus 1. You can take any values of ji and you can calculate jf corresponding to this ji. You will find that delta j can only take values either 0 or plus minus 1. For which combination? For this combination. और यहाँ पे जो पैरिटी का क्या होगी? पाई आई किसके बराबर हो जाएगी? बताओ जरा। पाई आई विल बी हाउ मच? टेल मी बाबा, इज देयर एनी डाउट हियर? पाई आई कितना होती है? पाई आई इक्वल्स टू माइनस, हाँ एग्जैक्टली, दैट विल बी पाई एफ, बिकॉज minus 1 की power L is again 0, so that will give you positive values. It means parity of parent should be equals to parity of product. So I can say there will be no change in parity. Delta pi, there will be no change in parity. तो हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई आपका बीटा डी का प्रोसेस गिवन होगी और वहां पे पैरिटी का कोई चेंज नहीं है, बट चेंज इन जे दैट आइदर 0 और प्लस माइनस 1, then I'll say that this decay, for this decay, this will be the condition, and this condition is called, first of all, L equals to 0 corresponding to allowed. L equals to 0 को हम क्या बोलते हैं? allowed by S equals to 1. S equals to 0 के लिए हम क्या बोलते हैं? Fermi transition. S equals to 1 corresponding transition is called Taylor transition.
गैमो टेलर ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आपको क्या देखना पड़ेगा, पेरेंट और डॉटर का जे का क्या चेंज है, एंड हाउ विल चेक दैट जे और डेल्टा जे, हाउ विल चेक, जस्ट जे आई माइनस जे। जे आई क्या है आपका, जे आई जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेरेंट, जे जो है आपका डॉटर का एंगुलर मोमेंटम, हाँ जो आपका मैग्नीट्यूड है। You can find that delta J if it is like 0 or plus minus 1, and if there is no change in parity, I'll say that will be allowed by Gamow-Taylor transition, है ना। तो allowed by Gamow-Taylor और फर्मी में फर्क क्या है, what is the difference? एस का सर, स्पिन का। एस वाला S का डिफरेंस है ना, ठीक है। Okay, now I'll summarize that all transition in beta decay. So first of all, हाँ जी, डेल्टा जे इज इक्वल टू जे आई माइनस जे एफ में मॉडुलस आएगा या नहीं? नहीं आएगा, प्लस माइनस 1 दोनों ही हो सकती है ना, 0 प्लस माइनस। एफ टी में लिखा था ना, उसमें मॉडुलस लगाया था। Please remove that modulus. I made a mistake there. Extremely sorry. Now you have a transition. I'll write that table. Please note. Then we'll solve that problem. You have a transition. You have a transition and corresponding L values. And there is a called Fermi transition. Fermi transition. Fermi transition. Fermi transition. Ft means what here? Fermi transition. And for Fermi transition, you have a two values, like you have a delta J and delta phi, है ना, delta J and delta phi, है ना. And there is a Gamow-Taylor transition, and corresponding for Gamow-Taylor, how will check, you will have a delta J and you have a delta phi, ठीक है ना. इसको लेवल कर लेना, सारे एक ही लेवल पे होंगे, ठीक है. So first transition is called super allowed transition. First transition is for super allowed. And super allowed transition means you have a parent nuclei having spin 0, parity plus, and there is a transition to daughter having spin 0 and parity plus. Super allowed. So that transition super allowed कब बोलेंगे, जब आपका जो parent है उसका spin कितना है, parent का spin जो है that is 0, daughter का spin भी 0 है, and there is no change in parity. This kind of transition will be called super allowed. सुपर अलाउड के लिए एल की वैल्यू कितना होगा बताओ, कैन यू प्लीज गेस, एल की वैल्यू कितना होगी सुपर अलाउड के लिए, आपको याद है दैट दिस थिंग, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज दिस थिंग इज मैचिंग विद एक्चुअली अलाउड बाय फर्मी ट्रांजिशन. फर्मी ट्रांजिशन में क्या था आपका कंडीशन, क्या था, डेल्टा जे दैट इज 0 एंड देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, एंड दैट वो कहां से आया था, वो कंडीशन कहां से आया था, व्हेन देयर इज एल इक्वल्स टू 0 एंड एस इक्वल्स टू 0. जब L equals to 0 and S equals to 0, then you will get that delta J that will be 0 and there will be no change in parity. ठीक है ना, समझ रहे हो ना, जो delta J equals to 0 आया था in allowed Fermi transition and there is no change in parity, वो कहाँ से आया था, when L equals to 0 and S equals to 0. तो यहाँ पे भी वही है, डेल्टा J equals to 0 यहाँ पे है और there is no change in parity. ये कब पॉसिबल है, when there is a L equals to 0. And this super allowed is only allowed by Fermi-Taylor transition. That you have to keep in mind. It will not be allowed by Gamow-Taylor transition. Okay. Then you
that is called allowed transition. It's called allowed transition के लिए L की वैल्यू अगेन कितना है? 0 है. Allowed transition के लिए L की वैल्यू कितना है? 0 है. And if it is allowed by Fermi transition, then delta J क्या होगी? Delta J की वैल्यूज क्या होगी? 0 होगी, right? And there is no change in parity. ठीक है ना? अगर allowed transition आपका गैमो टेलर में है तो डेल्टा J क्या होगी? Either 0 और प्लस माइनस 1, right? Again there is no change in parity. तो नो चेंज इन पैरिटी देखना बड़ा सिंपल है. जब आपका L इवन है देयर विल बी नो चेंज इन पैरिटी. और डेल्टा J का कंडीशन वी हैव कैलकुलेटेड. डेल्टा J इक्वल्स टू 0 फॉर फर्मी टेलर एंड इज 0 प्लस माइनस 1 फॉर फर्मी ट्रांजिशन एंड फॉर गामा टेलर ट्रांजिशन. ठीक है ना? देन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन. एंड फॉर फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन L की वैल्यू कितना होगी? 1 होगी. ठीक है ना? Okay, now tell me what will the possible values of delta J here. यहाँ पे जो डेल्टा J का पॉसिबल वैल्यू होती है दैट इज प्लस माइनस 1 होती है. यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो बाय माय रूल, यू विल गेट प्लस माइनस 1. Parity change, yes. Yes, of course, yes. Parity change, yes. Will be yes. और यहाँ पे जो आपका डेल्टा J की वैल्यूज होगी फॉर फर्स्ट फॉरबिडन क्या क्या पॉसिबल है? दैट विल बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 and again there will be change in parity. Again there will be change in parity because L values is odd, है ना? तो जब भी जब भी आपको डेल्टा J की वैल्यूज इस तरह की मिल रहा है in the decay process, it is like 0 or plus minus 1 or plus minus 2 and there is a change in parity, then I'll say that will be first forbidden allowed by that will be first forbidden gamma Taylor transition, है ना? तो ऐसा भी कोई ट्रांजिशन हो सकता है कि allowed by और फर्स्ट फॉरबिडन बाय फर्मी रूल एज वेल एज गामा टेलर ट्रांजिशन. जैसे सपोज मान लो आपको इस तरह की मिला है कि डेल्टा J की वैल्यू सपोज मान लो प्लस माइनस 1 मिले है एंड देयर इज अ चेंज इन पैरिटी. तो देखो डेल्टा J की वैल्यूज प्लस माइनस 1 फर्मी में भी है और गामा टेलर में भी है एंड बोथ में क्या है? देयर इज चेंज इन पैरिटी. तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट फॉरबिडन बाय. अगर इस तरह की केस आपको मिले देन आई से इट विल बी फर्स्ट फॉरबिडन बोथ बाय Fermi as well as gamma Taylor transition. ठीक है ना? Then if that is called second forbidden, that is called second forbidden transition, and for that L equals to कितना? 2. Okay, and that J values for Fermi it will be plus minus 2 and there will be no change in parity, and for gamma Taylor it will be plus minus 2 or plus minus 3 and there is no change in parity and so on. And this is higher order, but I don't think that will be more. I mean, इतना आपको याद करने का जरूरत नहीं. इतने में ही आपका आ जाएंगे चीजें, ना? जितना आपको रिक्वायर है, if you want to remember this much, it will be more than sufficient. ठीक है ना? Okay. Now let us solve the problem that will be clear. Otherwise, you will forget everything. तो सपोज इस तरह की आपको डीके गिवन है. सपोज यह है पैरेंट न्यूक्लियाई लाइक कार्बन 612, है ना? इसका जो स्पिन पैरिटी है 0 प्लस है and it is decaying to daughter बोरॉन 510 और इसका स्पिन पैरिटी हो 0 प्लस है. ठीक है ना? ये आपका गिवन है बीटा डीके, है ना? पेरेंट का स्पिन पैरिटी 0 प्लस, डॉटर का स्पिन पैरिटी 0 प्लस है. ये वाला ट्रांजिशन को क्या बोलोगे आप? Sir, super allowed. एग्जैक्टली, इट विल बी कॉल्ड सुपर अलाउड. सुपर अलाउड बाय फर्मी ट्रांजिशन.
ठीक है, super allowed by Fermi transition. Okay, there is another, suppose you have a, now you can give that number also. Second number I'm giving, suppose you have a helium 2,4, का spin जो है 0 parity even है, is decaying to lithium 3,6, और इसका spin parity जो है 1 class है मानो, है ना. So this is a beta decay. Now can you tell me what kind of transition it is? First forbidden. First forbidden. फर्स्ट फॉरबिडन में तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 1 होती है फर्स्ट फॉरबिडन ना. एल 1 इक्वल्स टू फर्स्ट फॉरबिडन, 2 इक्वल्स टू सेकंड. इट्स वेरी सिंपल. नाउ दे सी ऑन अगर हो जाएगी तो फिर देयर विल बी चेंज इन पैरिटी, है ना. यहाँ पे देखो पैरिटी का कोई चेंज नहीं है. पैरिटी का कोई चेंज है? नो. व्हाट विल बी दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा जे? टेल मी फर्स्ट. ट्रांजिशन सर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जे हियर? You can take either plus 1 or minus 1, right? Suppose, Yes. so it will be like ji minus jf, so it will be how much? -1. ठीक है. And you have a parity delta pi, there is change in parity? No. अब किसके साथ मैच कर रहा है टेबल में देखो जरा. डेल्टा जो है -1 है and there is no change in parity. किसके साथ मैच हो रहा है? Allowed transition सर। Allowed किसके साथ? This is allowed in Fermi as well as Gamma-Taylor, right? Exactly. So it will be called allowed by Gamma-Taylor. GT. GT means Gamma-Taylor transition. ठीक है. सर ये हम बीटा डीके के लिए कर रहे हैं ना, तो अब मास नंबर तो नहीं चेंज होता ना, इसमें तो चेंज हो रहा है ना, जैसे कार्बन 12 से बोरोन 10 हो रहा है. हाँ, you are correct actually. कैसे हो सकती बताओ पुनीत, tell me. Yes, yes. It's a question, sir. Mass number should not be changed here, right? Mass number should not be changed here. No. Right, sir. Right. You're actually you're correct whatever you are saying. ठीक है ना. बट हाँ रियलिटी में अगर बीटा डीके में देखो, देयर शुड नॉट बी चेंज इन मास नंबर. हाँ, but this is, I mean, this is not actually physically significant, but I am just solving the problem. I think I could not use like this anyway, but हाँ इस तरह के अगर प्रॉब्लम आए तो you can solve it, right? मैंने हाँ your point is absolutely correct and I should appreciate it. I should appreciate it. There should not be change in mass number. But इस तरह के अगर प्रॉब्लम गिवन है ना, I have taken that from standard book itself. But I did that time I didn't thought that. Very good actually. सर जब हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये बीटा डीके या सिर्फ नहीं आपको मेंशन होगा. एग्जैक्टली क्वेश्चन में तो मेंशन होगी ना. या हाँ क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी सारी चीज. डोंट वरी अबाउट दैट. देन अदरवाइज हाउ विल अंडरस्टैंड दैट. नहीं सर पैरिटी एक बार फिर से बता दी. हाँ जी क्वेश्चन बोलिए जी. सर पैरिटी के बारे में एक बार फिर से समझा दीजिए इस क्वेश्चन में. पैरिटी? यस सर. पैरिटी देखिए ना, देखो इसका पैरिटी क्या है? प्लस. इसका प्लस पैरिटी क्या है? प्लस. तो पैरिटी का कोई चेंज हुआ है जब डीके हुआ है? और सर ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है? नंबर कौन सा? ये वाला. हाँ ये आपका जे. ये आपका जे है और ये आपका पैरिटी है. हाँ ओके ओके ओके. ठीक है ना. I should take that point what you said ना. Next time it will be corrected. Thank you so much. Okay. Next problem. Suppose you have a boron. Boron. Atomic number 5, mass number 30, and it's going to. I should write that spin parity here also. It will be like 3/2 minus. It's going to carbon 613, and our spin is given 1/2 parity minus. Now, can you please tell me what kind of transition it will be?
Can you please tell me what kind of transition it will be? So I can see there is no change in parity again, right? Delta pi, both are actually minus, so there is no change in parity. Perfectly fine. And then if I check the delta j कितना आ जाएगी? 3/2 minus 1/2 कितना है ये? कितना आ जाएगी? 1 आ जाएगी? 1 2 नहीं पुनीत, जब हम डेल्टा जे डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, दैट इज माइनस सॉरी दैट इज मैग्नीट्यूड. डेल्टा जे हम कैसे डिफाइन किया था? जे आई माइनस जे, राइट? तो जे आई कितना है आपके पास? 3/2 माइनस 1/2. ठीक है ना? Okay, sir. Yes, sir. So that will be your on. Now tell me, delta j is on and you have a no change in parity. That will be correspond to what? Delta j Sir, plus allowed by, first of all, allowed by what? GT. Exactly, allowed by GT. ठीक है ना? Now if you have like this, you have a neutron. This is possible in beta decay. न्यूट्रॉन का सपोज मान लो स्पिन पैरिटी गिवन है हाफ माइनस, इज डिकेइंग टू प्रोटॉन, इसका स्पिन पैरिटी गिवन है हाफ माइनस. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ डिके इट इज? That is possible in beta decay, right? Neutron is going to change to proton. No, super it will not be. अगर 0 to 0 है, that then it will be called super allowed. ठीक है ना? You have to keep in mind whenever there is a 0 to 0 transition without changing parity, it will be called super allowed. Allowed by Fermi transition. So you have a delta pi. There is no change in parity, right? And if you see that delta j कितना आ जाएगी यहाँ पे? 0. तो देखो डेल्टा जो है 0 है, फर्मी में भी है और गामा टेलर में भी है, राइट? देखो चेक करो, फर्मी में भी है और गामा टेलर में भी है, एंड देयर इज नो चेंज इन पैरिटी. तो हम क्या बोलेंगे इसको? अलाउड बाय बोथ फर्मी एंड जीटी ट्रांजिशन. अलाउड बाय बोथ फर्मी एंड, आपको दिख नहीं रहा है? नहीं, इधर लिख दूं? Yes, sir. हाँ, लिख लो आप लोग. अलाउड बाय बोथ फर्मी एंड जीटी ट्रांजिशन. अलाउड बाय बोथ फर्मी एंड जीटी ट्रांजिशन. अलाउड बाय बोथ फर्मी एंड जीटी ट्रांजिशन. ठीक है ना? नेक्स्ट you have नाइट्रोजन 717. इसका जो आपका स्पिन गिवन है, दैट इज 1/2 माइनस इज डिकेइंग टू ऑक्सीजन 817, and you have a spin parity that is 5/2 plus. Now can you tell me? So I can see here there is a change in parity, right? Minus and plus, so there is a change in parity. First forbidden. फर्स्ट फॉरबिडन होंगे. एंड दैट विल बी डेल्टा जे. डेल्टा जे कितना आ जाएगी यहाँ पे? डेल्टा जे कितना जाएगी? 1 minus 5/2 माइनस 2. तो ये कहाँ पे अवेलेबल है? First forbidden by GT. Exactly. So first forbidden by GT. ठीक है ना? ठीक है. अगर सपोज मान लो ये वाला गिवन है, जरा इसको ट्राई करो. सपोज यू हैव एक्स न्यूक्लियाई डिकेइंग टू ऑयल.
X nuclei, spin is 3/2 minus decaying to I, है ना, और इसका जो है 9/2 प्लस। कैन यू ट्राई दिस वन? सर 9/2 का पैरिटी क्या? प्लस है, 9/2 प्लस, 9/2 प्लस है, y का जो ये है 9/2 प्लस। So parity, yes, there is a change in parity, right? Delta, yes. And if I calculate delta j, कितना आ जाएगी यहाँ पे? -3। अगर देखो, अगर जब आपका L की वैल्यूज कितना थे, 2 थे, तो फार्मी के लिए डेल्टा जे कितना हो रहा था? सर -3, बट सर पैरिटी doesn't change there, no? No change. नहीं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अभी ये देखो, आपका डेल्टा जे यहाँ पे नो चेंज, राइट? तो एल की वैल्यू जब 2 थी, तो फार्मी के लिए डेल्टा जे कितना था? Plus minus 2 and गैमोटेलर minus के लिए? 3. Plus गैमोटेलर minus 2 and minus 3. plus minus 3. प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, राइट? Yes, sir. हाँ, अब सपोज मान लो पैरिटी चेंज, तो वो ये तो नहीं हो गया, वहां पे पैरिटी चेंज नहीं था। अब इसके लिए आपको हायर एल में जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डेल्टा जे जो है 3 पॉसिबल है। एक तो आपका एल इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल था, एल इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल था, बट वहां पे पैरिटी चेंज नहीं था। आपको हायर एल के लिए जाना पड़ेगा। तो सपोज मान लो एल इक्वल टू 3 है, तो एल इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैन यू प्लीज राइट दैट डेल्टा जे कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्मी टेलर क्या हो जाएगी? ऊपर वाला को देखो और सोचो, 2 को देखो, जब 2 थे तो डेल्टा जे कितना थे? प्लस माइनस 2 थे, राइट? और आपका गैमा टेलर के लिए प्लस माइनस 2 प्लस Plus माइनस minus 3 and plus minus के लिए 4. क्या हो जाएगी आपका? फर्मी के लिए आपका प्लस माइनस 3 हो जाएगी, और गैमा टेलर के लिए कितना हो जाएगी? Plus minus 3 plus minus 4. प्लस माइनस 3 प्लस Plus माइनस, minus 4. ठीक है ना? तो प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो एक्चुअली प्लस माइनस 3 जो है आपका फर्मी में भी है और गैमोटेलर में भी है, एंड देयर इज अ चेंज इन पैरिटी। सो हम क्या लिखेंगे इसको? थर्ड फॉरबिडेन both by Fermi and GT, गैमोटेलर ट्रांजिशन। सर L इज इक्वल टू 3 होगा ना? हाँ जी, L इक्वल टू 3 होगी ना। तो हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा लोअर एल टू हायर एल, क्योंकि लोअर एल जो है वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है ना। आपको कहीं अगर लोअर एल में मिल गया ना, तो दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबल। जब भी आप ट्रांजिशन चेक करोगे, यू हैव टू फाइंड, है ना, कि लोअर एल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कि दैट विल बी मोर प्रोबेबल, है ना। तो यहाँ पे जो केस हो रही है, तो लोएस्ट एल इसके लिए जो पॉसिबल है दैट इज 3, इसके नीचे हो ही नहीं सकता। नाउ इज इट ट्रू, इज इट फाइन? कितना क्लियर है आप लोगों को? टेल मी। इफ इट इज क्लियर देन यू कैन स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी टाइम ओवर। Yes, sir. Clear. देन सी यू। थैंक यू सर। हाँ, welcome. Thank you, sir.